Hello everyone, how are you? I hope you all will fine. So, see, as you can see here in this video, we will do the revision K to Z. So, in my past videos, we has done the revision A to K. Okay, now we are doing the practice of cursive letter, but before the cursive letter, in between we should do the revision of capital letters. It is must. Okay, so let's start how to write or how to do revision. Firstly, we'll read it. So now let's start. K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Okay, so now let's write. दोनों तरीके से देखेंगे, with dots or without dots. Okay, so start from the top. Firstly, make a standing line down. Okay, and make a slanting line right to left till the middle, and middle one more slanting line touching to the down. Okay, now make L starting from the top, make a standing line down and make a sleeping line to the right. M starting from the top, standing line, go back to the top, make a slanting line to the right till the bottom, from the bottom till the up one more make slanting line, from the top go back to the top, make standing line. M. Now N starting from the top, make standing line down, go back to the top, make slanting line to the right till the bottom, and from the bottom make a standing line till top. Starting from the top and make a big circle like this, and for the P, standing line and make a curve like this. Okay, and if you want to teach on dots, so you can give the dots for the K like this in the starting, means जब बच्चे बनाना start कर रहे होते हैं ना, तो you can give the dots like this way. And how will you join the dots? Firstly, make a standing line, join 3 dots, and from the this dot to this make a slanting line, or this is on dot pattern. For the L you can give this dot, 3 dots. So make a standing line and one sleeping line. For the M, give the dots like this way. Okay, so firstly make standing line, slanting line, slanting line and standing line. For the N, give the 4 dots like this way, standing line, slanting line, standing line. For the O, give 2 dots, put 2 dots on 3 line like this way, and make a circle joining the both dots. For the P, give the 3 dots, standing line and curve like this way. Okay, now it's time to Q. Make a circle and this Q, standing line, curve, firstly make a P and then slanting line to right, R. Now S, curve, sleeping line,
standing line T, U curve, V like this, and for W standing line, slanting line, slanting line, standing line, or you can say opposite arm. Okay, for X, make a 2 slanting line crossing to the, make Y slanting line and one more slanting line across. Now Z sleeping line, slanting line, sleeping line. ठीक है, and for the Q you will give the dots, 3 dots like this way, है ना. So make a circle like this way, and this to this you can put the this, and for the R you can give the dots like this way. So firstly make a P, and from second dot to this 4 dot join it, and for the S you can give the 3 dots like this way. So firstly start for the top, twist to the right, and from the second to third twist to the left. Okay, and for the T put 3 dots like this way. Firstly make sleeping line and then standing line, and for the U you can put simply 2 dots like this way. So simply make a curve for upside. For the V you can give the dots same like T, but the pattern will different for making. So firstly make slanting, one more slanting, UV, and for W you can put the dots opposite M, ऑपोजिट एम में हमने यहाँ 3 डॉट्स दिए तो ऊपर 2 और इसमें ऊपर 3 और नीचे 2. तो स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन. ओके, नाउ फॉर द एक्स गिव 4 डॉट्स लाइक दिस वे. तो मेक 2 स्लैंटिंग लाइन क्रॉस लाइक दिस वे. फॉर द वाई you can give the dots like this way, or this. For the Z putting the 4 dots same like X. Firstly sleeping line, slanting line or sleeping line. Now see it's done. डॉट पैटर्न मैंने क्यों बता दिया है आपको कि आपको लगता है मीन्स 3 years ओल्ड चाइल्ड के लिए डॉट नेसेसरी हो जाता है, वहाँ बताना पड़ता है क्योंकि बच्चे फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं. बट एज आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियोज़ एंड ऑलवेज आई टोल्ड टू यू कि डॉट पैटर्न सिर्फ स्टार्टिंग स्टूडेंट्स के लिए है. ऐसा नहीं है कि आप हमेशा उनको डॉट्स दें. इफ़ दे आर कंफर्टेबल विदाउट अ डॉट्स सो डू द प्रैक्टिस विदाउट डॉट्स. बट फॉर द हेल्प मीन्स कई बच्चे नहीं बना पाते हैं, लाइक डब्लू कैसा भी बना देते हैं और एक्स प्रॉपर नहीं बनाते हैं. तो एक फॉर्मेशन, एक प्रॉपर फॉर्मेशन लाने के लिए हम उनको डॉट्स दे देते हैं, ट्रेसिंग पैटर्न दे देते हैं. ट्रेसिंग पैटर्न ऑल्सो यू कैन यूज़ इट, ट्रेसिंग पैटर्न दे सकते हैं. तो इससे उनका हैंड राइटिंग फाइन होता है और उनको समझ में आता है कि हाँ इस लेटर का प्रॉपर फॉर्मेशन ये है. ठीक है, तो इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया K to Z. आने वाले वीडियोस में हम कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर्स रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ भी प्लान करेंगे. तो अगर आप चाहते हैं आप ये सारी चीज़ें देखें तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वहाँ जाके प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ देख सकते हैं. ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज़ शेयर इट and subscribe it. Okay, thank you.